Hello, friends. I hope you all are safe. As you all know, we cannot go to school due to the current COVID-19 pandemic, but this need not keep you away from your studies. As Centerpoint School, Katol Road, Nagpur, and my Radio City bring to you Gyanvani, education at your doorstep. So let's begin. Today, we will be studying the poem "Where the Mind is Without Fear" by Gurudev Rabindranath Tagore. This poem was written when India was under the British rule and people were eagerly waiting to get their freedom. The poem is written in form of a prayer to God, the Almighty. The poet prays for true freedom of India, a place where knowledge is free and people are free from fear. He wants people from all religions to be united. Tagore reveals his own thoughts and views on freedom through the poem, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. In the first line, the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion. He wishes that everyone in his country should be fearless and have his head held high in dignity. इस कविता में कवि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके देशवासी किसी भी प्रकार के ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त रहें। वे यह चाहते हैं कि देश के सारे लोग गौरव से सिर उठाकर जिए, क्योंकि तभी सब सही मायने में स्वतंत्र हो पाएंगे। Where knowledge is free. In the second line, the poet dreams of a nation where knowledge would be free. कवि के सपनों के भारत में सभी को बिना किसी भेदभाव के ज्ञान मिलना चाहिए। Education should not be restricted to a particular class only, but everybody should be allowed to acquire knowledge. Children should learn freely from nature and the world around them. They should not be forced to memorize some predetermined lesson. बच्चों को उनके आसपास के वातावरण के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कोई पाठ रटने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा टैगोर का मानना था। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. In these two lines, the poet wishes that there should be no division among people based on their caste, creed, color, religion, or other baseless superstition. इन पंक्तियों में कवि कल्पना करते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एकजुट होकर आने वाली कठिनाइयों का सामना करें। Where words come out from the depth of truth. Tagore wants a nation where people are truthful. मतलब कवि ऐसे देशवासी चाहते हैं जो ईमानदार हो। कवि के अनुसार सभी को सच बोलना चाहिए और अपने दिल से बोलना चाहिए। Where tireless striving stretches its
arms towards perfection. In the sixth line of the poem, the poet wants everyone in the country to work hard to reach their goal, and in the long run to reach perfection. He thinks they should not be tired by working. People should not be lazy and ignore their work. कवि इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि सबको मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तभी सिद्धि प्राप्त होगी। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए और अपने काम को कभी नहीं टालना चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. In line 7, the poet compares reason or logical thinking to a clear stream and dead habits or illogical beliefs to a dreary desert. In short, people's thoughts should be monitored by rational thinking, not by superstition. Logic should rule over old, baseless beliefs. कवि ने इन पंक्तियों में तर्क की बातों को स्वच्छ जल माना है और झूठी बातों को एक रेगिस्तान कहा है। कवि के अनुसार हमें झूठी बातों पर, मतलब अंधविश्वास की बातों से नहीं, बल्कि लॉजिक या तर्क से काम लेना चाहिए। Where the mind is led forward by into ever-widening thought and action. In line 9 and 10, the poet wishes his countrymen to be progressive and broad-minded and do something unusual or extraordinary, overcoming the narrowness of mind. कवि सभी देशवासियों को प्रगतिशील बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे चाहते हैं कि सारे देश के लोग कुछ बड़ा और असाधारण कर दिखाएं, जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. कवि इन पंक्तियों में यह प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को जागृत बनाओ ताकि वे अपने विचार और कार्य दोनों के क्षितिज को व्यापक कर सके। यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो भारत स्वर्ग में रूपांतरित हो जाएगा और तभी हमारे देश को सही मायने में स्वतंत्रता हासिल होगी। Poem was earlier pronounced as poem, but now it is pronounced as poem. We also have a few questions. Are you ready to answer them? Question number 1. When and why was this poem written? And who is the poet? Question number 2. Identify the figure of speech in the sentence where tireless striving stretches its arms towards perfection. Question number 3. What is the poet trying to say by means of this poem? तो मित्रों, हमारा आज का सफर यहीं तक था। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर मेंटरिंग ऐप माय कैप्टन का, जिनके सहयोग से हम यह प्रयोजन आप सभी तक ला पाए। यदि आप यह पोम फिर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सेन शिक्षा मित्र CEN शिक्षा मित्र सेंटर पॉइंट स्कूल पर जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स और साइंस के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। तो हम कल मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल माय रेडियो सिटी पर अगले लेसन द थीफ स्टोरी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। अलविदा।